हेलो फ्रेंड्स मु श्रेया स्वागत जनाऊँगी आम चैनल द क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। आशा करुँची आपण समस्ते बहुत बढ़िया से निजर एग्जाम की प्रिपरेशन करुथिबे। जदि आपण माने ओटीटी एवं जेटी लगी प्रिपरेशन करूछंती तो सीए आपण मान लगी नहीं आसी क्रैश कोर्स। जदि आपण क्रैश कोर्स जॉइन करबा को चाहुछंती हमर टेलीग्राम ग्रुप रे से डिटेल्स रे दिया जायछि। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करबा लगी हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायथिबा लिंक रे जांतु एवं टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करी सेठारु डिटेल्स जानि नियंतु। तो आजिर क्लास रे आमे माने सीडीपी रो किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करबा जहा कि आपण मानकर एग्जाम लागि बहुत इंपोर्टेंट रहिछि। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य एई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य एथिरे ऐड अछि। तबे चलंतु आ देरी न करिके क्लास को स्टार्ट करबा एवं देखिनेबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन टी कोन रहिछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि The belief that children's behavior can be modified by reinforcers and punishers is based on the idea that development is primarily influenced by what? Option A रहिछि heredity only, option B रहिछि both heredity and environment, option C रहिछि environment only, option D रहिछि neither heredity nor environment। तो एटा विश्वास करा जाउछि जे चिल्ड्रेन मानकर बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड किछि रेनफोर्स द्वारा हो किंबा पनिश करिके हो से मानकर बिहेवियर को चेंज करी हबो। तो डेवलपमेंट रो एही आइडियाटा कहा द्वारा इन्फ्लुएंस होइछि हेरिडिटी रू कि बोथ हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट रू कि ओनली एनवायरनमेंट रू कि कोनोसी थ्रू भी नुहे। तो यार करेक्ट आंसर टी होछि एनवायरनमेंट ओनली। ठीक अछि हेरिडिटी रू एटा आसी न थाए जेहेतु बिहेवियरटा मॉडिफाई हेइ थाए पिला को दिया जाउथबा रेनफोर्स हो किंबा पनिशमेंट हो। जदि से किछि भलो काम करूछि तेबे ताको निहाती सावासी दिया जिवो, जदि से किछि खराब काम करूछि ताहेल ताको पनिशमेंट दिया जिवो। तो ए जो डेवलपमेंट रो आइडियाटा साधारणतः काहा द्वारा इन्फ्लुएंस हैला ना केवल एनवायरनमेंट द्वारा ही, हेरिडिटी सहित यार कोनोसी प्रकार रो लिंक नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि ए चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग ए पेंसिल एंड राइट। गोटे शिशुटीए गोटे बॉल को धरी फोपाडी पारिबो बिफोर से पेंसिल धरी की लेखिबा आगरु। Which principle of development this situation illustrates? Cephalocadal principle, proximodistal principle, uniformity of pattern, principle of integration। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो कोन ना proximodistal principle। गोटे शिशु बॉल धरी की खेली पारे बिफोर से जते बेले पेंसिल पेन धरी की लेखिबा आगरु से बॉल रे खेली पारे। तो एई जो प्रिंसिपलटा रही छि डेवलपमेंट रो एटा साधारणतः proximodistal principle को इलुस्ट्रेट करि थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस व्हेन। केतेबेले मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट घटी थाए टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, टिल द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, टिल द पीरियड ऑफ अडल्टहुड ना थ्रू आउट द लाइफ स्पान। मोटर एवं कॉग्निटिव डेवलपमेंट केतेबेले हेइ थाए ना थ्रू द लाइफ स्पान, जीवन सारा मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट चली थाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही Which of the following is a primary agency of socialization for children? School, religion, family, community। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो कोन ना फैमिली। प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन गोटे शिशु पई होउची तार परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि as per Jean Piaget's ideas on language and thought which of the following statements is true? ऑप्शन ए रहिछि thought determines language, ऑप्शन बी रहिछि language determines thought, ऑप्शन सी रही लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंस प्रोसेस, ऑप्शन डी रही लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनेट प्रोपोजिशंस। तो जीन पियाजेट को लैंग्वेज एवं थॉट रो जो आइडिया रही थिला एमान को मध्यरो को स्टेटमेंटटा ता ऊपर सठिक बोलिका क्वेश्चन रे पचरा जाइछि। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो थॉट डिटरमाइन्स लैंग्वेज। आमे जहा भाबेबा आमे ताहा हम लैंग्वेज रे परिप्रकाश करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि रिवर्सिबिलिटी the ability to reverse actions is a basic accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of cognitive development। Piaget को cognitive development theory अनुसारे रिवर्सिबिलिटी cognitive development रो को स्टेज रे आसीता है। ऑप्शन ए रहिछि सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी रहिछि प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी रहिछि कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी रहिछि फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यार करेक्ट आंसर टी होछि कंक्रीट ऑपरेशनल। रिवर्सिबिलिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो कंक्रीट ऑपरेशनल समय रे बा स्टेज रे आसी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि ए मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड peers to support and guide the other students। which theoretical frame is she trying to apply in the class। तो गोटे मैथमेटिक्स टीचर कौन करिथांती
जो सांग माननकु तथा स्कूल रे जो स्टूडेंट माने भल पढ़ी थांती तथा भल मैथ तांकर होई थाए से माने कोन करि थांती कि तांकर अलगा सांग तथा टीचर अलगा स्टूडेंट माननकु सेथिरे सहाय्य करि थांती। तो ए थियोरेटिकल फ्रेम रे व्हाट इज सी ट्राइंग टू अप्लाई इन द क्लास कौन से ट्राई करि थांती अप्लाई करबा को क्लास रे ऑप्शन ए रहिछि लेव वाइगोट्स कीज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कि बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कि बर्नर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कि पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। तो यार करेक्ट आंसर टी होची लेव वाइगोट्स्कींकर थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक अच्छे जितेबले गोटे शिशु तथा गोटे छात्र आउ गोटे तार सांग तथा छात्र को साहाय्य करुछि कौन सी पढ़ारे हो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन रे हो तो एटा आसी थाए कौन ना लेव वाइगोट्स्कींकर थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रे। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन टी रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेव वाइगोट्स्कीज व्यू ऑन डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड कल्चर लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ल्ड लैंग्वेज एंड कल्चर लैंग्वेज एंड मैच्योरेशन। तो समस्ते मन रखिबो जेतेबेले लैंग्वेज कथा आसे सेतेबेले लेव वाइगोट्स्की निहाती थांते सेठारे लैंग्वेज एंड कल्चर इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज एवं कल्चर कथा लेव वाइगोट्स्कींकर व्यू ऑफ डेवलपमेंट रे आसी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही जेंडर इज ए डैश कॉन्सेप्ट जेंडर होची को कॉन्सेप्ट मोरल कि बायोलॉजिकल कि सोशल कि फिजियोलॉजिकल जेंडर टा होची गोटिए सोशल कॉन्सेप्ट नॉट ए फिजियोलॉजिकल नॉट बायोलॉजिकल नॉट मोरल कॉन्सेप्ट जेंडर इज ए सोशल कॉन्सेप्ट। देन क्वेश्चन टी रही नेता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स प्लांट्स मेटल्स एंड मिनरल्स। नेता कौन करिथाए कि सब प्रकार एनिमल को चिन्हि पारे प्लांट को चिन्हि पारे मेटल एवं मिनरल को मध्य चिन्हि पारे। आज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज सी डेमोन्स्ट्रेटिंग। नेता को जेहेतु सब किछि से चिन्हि पारुछि जानि पारुछि तो गार्डनर को थ्योरी यह सहित संपर्कित इंटरपर्सनल नेचुरलिस्टिक लिंग्विस्टिक कि इंट्रापर्सनल। तो जेहेतु से सब किछि को चिन्हि पारुछि जानि पारुछि एनिमल को प्लांट को मेटल को मिनरल को तो नेता डेमोन्स्ट्रेट करिथाए गार्डनर नेचुरलिस्टिक थ्योरी को। देन क्वेश्चन टी रही टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास ए प्राइमरी स्कूल टीचर शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एवरीवन इन क्लास एंड पनिश द चिल्ड्रेन हु डिसोबे हर। ऑप्शन बी रही फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज पेपर पेंसिल एज अ प्राइमरी वे ऑफ असेसमेंट। ऑप्शन सी रही हैव यूनिफॉर्म करिकुलम एंड पेस ऑफ लर्निंग फॉर ऑल। ऑप्शन डी रही प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। गोटे क्लास रे सब पिला माने गोटे प्रकार पाठ पढ़ी न थांती कि तांकर चरित्र भी गोटे प्रकार होई न थाए। ठीक अच्छे गोटे प्राइमरी स्कूल टीचर से जगह कौन कर इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स। ओके देन क्वेश्चन डी रही कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ऑन ए वैरायटी ऑफ टास्क थ्रू आउट द मिंट फॉर कीपिंग ए रेकॉर्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस इज नोन एज ए रूब्रिक फाइल डाटा सीट पोर्टफोलियो। जेतेबेले गोटे कलेक्शन होता है स्टूडेंट मानकर विभिन्न वर्क को लेकिन विभिन्न टास्क से दि जाए थ्रू आउट द ईयर एवं तार गोटे रेकर्ड रखा जाए से परफॉर्मेंस को लेकिन तो यहाँ को कौन कह जाए यहाँ हूँ कौन ना पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही इन ए प्रोग्रेसिव स्कूल द एडुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रेन एक्टिव एक्सप्लोरर्स एक्टिव फॉलोअर्स पैसिव फॉलोअर्स कि पैसिव एक्सप्लोरर्स। गोटे प्रोग्रेसिव स्कूल रे द एडुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रेन तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए एक्टिव एक्सप्लोरर्स कारण गोटे प्रोग्रेसिव स्कूल रे सबू चिल्ड्रेन सेठी एक्टिव रहिबे तांकर पढ़ारे हो को करिकुलर एक्टिविटीज रे हो। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही फ्लुएंसी एलाबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इगोसेंट्रिज्म एक्सटर्नल मोटिवेशन क्रिएटिविटी फंक्शनल फिक्सनेस। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ना क्रिएटिविटी फ्लुएंसी एलाबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी एडाक हूँ क्रिएटिविटी गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स with orthopedic challenges requires what? Standardized curriculum, infrastructural accessibility, rigid attitude of authority, placement in special school.
तो किछि स्टूडेंट ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड अटंती तो से स्टूडेंट मानक लागि इंक्लूजन केतेबेले आसीबो तांको जेतेबेले इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी मिलिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि डायस्लेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी रहिछि स्पेक्ट्रम ऑफ साइकोसोशियल डिसऑर्डर्स, ऑप्शन डी रहिछि कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। डायस्लेक्सिया टा होछि कोन? डायस्लेक्सिया होछि लर्निंग डिसऑर्डर, ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। तो ऑप्शन ए होछि यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रहिछि देखिबा डैश इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इनक्लूसिव टीचिंग। एमान को मध्यरु कोटा गोटिए प्रिंसिपल नुह इनक्लूसिव टीचिंग रा? इक्विटी, सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, सिस्टमैटिक एडाप्टेशन टू डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। कारण कोन ना इनक्लूसिव स्कूल रे समस्त को एका भाव रे देखा जाय थे, काहा को सेग्रीगेट करा जाय न थाए कि लेबलिंग करा जाय न थाए। ठीक अछि, तबे यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ए बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस इज दैट दे मस्ट व्हाट? रिमेंबर द एक्शंस ऑफ द मॉडल, पे अटेंशन टू द मॉडल, assessment of their acts of imitation, repeat and practice the behavior of the model। तो जेतेबेले गोटे स्टूडेंट किछि ऑब्जर्व करिकि निज मध्य रे किछि चेंजेस आनी थाए तार बिहेवियर रे, तो सेतेबेले द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस ताको आमे माने कोन कहिबा? इज दैट दे मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल। ओके, तो ऑप्शन बी हो जारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर्स इज इंपोर्टेंट फॉर ए टीचर as she can identify weak and bright learners, she can understand the learner's thought process, she can inform parents about the learner's carelessness, she can segregate and rank the learners। जेतेबेले गोटे शिक्षार्थी किछि भूल करिथाए सेतेबेले गोटे टीचर कोन करिवो? निहाती भाबरे सी कैन अंडरस्टैंड द लर्नर्स थॉट प्रोसेस। से कौन भाबी कि ताको भूल करिछि सेटा चिन्हिबो एवं तार एरर को करेक्शन करिवो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी कंटेंट ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, एक्सपेरिमेंटल कि बिहेवियरिस्टिक। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो करना एक्सपेरिमेंटल। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा एनईपी 2020 अनुसार लर्निंग शुड बी एक्सपेरिमेंटल। देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि तानवी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीथिंग जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन, सी इज यूजिंग डैश स्ट्रेटेजी टू कोप विथ एंजाइटी। ऑप्शन ए रहिछि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन बी रहिछि इमोशन मैनेजमेंट, ऑप्शन सी रहिछि अवॉइडेंस, ऑप्शन डी रहिछि डेनियल। तो क्वेश्चन रे हमको पचारिला कि तानवी दीर्घ निश्वास नौछि तार एग्जाम पूर्वरु, ताहले से कौन करबा को चेष्टा करूछि? ठीक अछि, तो यार करेक्ट आंसर टी होछि इमोशन मैनेजमेंट। ओके, देन क्वेश्चन टी रहिछि ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक रोहिणी लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स हर एल्डर सिस्टर had without any prompting from anybody। रोहिणी इज ए कॉम्पिटिटिव लर्नर, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्नर कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। तो रोहिणी जे कि कोविड-19 पैंडेमिक टाइम रे ताको जेहेतु स्टोरी बुक पढ़िबा को भल लागे से तार बड़ भौणीर स्टोरी बुक आनिकी पढ़िला, तेबे रोहिणी को आमे एठी किना कोन कहिबा? रोहिणी होची इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। ओके, देन क्वेश्चन टी रहिछि अल्टरनेट कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए रहिछि इनएबिलिटी टू लर्न, इंट्यूटिव आइडियाज about particular concept, baseless assertions, permanent conceptual stagnation। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हबो ना इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कंसेप्ट। देन क्वेश्चन टी रहिछि ए प्राइमरी टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एट लीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक, द टेक्निक वुड बी। ऑप्शन ए रहिछि हाईली इफेक्टिव सिंस रिहर्सल एंड रिपीटेशन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ कंटेंट। ऑप्शन बी रहिछि इफेक्टिव सिंस रिपीटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन लेस देन 5 टाइम्स लीड्स टू इमीडिएट फॉरगेटिंग। ऑप्शन सी रहिछि इनइफेक्टिव सिंस मोर रिहर्सल इज नॉट ए सुइटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। ऑप्शन डी रहिछि ineffective since rehearsal is a complex method of meaningful learning। तो गोटे प्राइमरी टीचर
तार स्टूडेंट मान को कहला ऑल द इनफॉरमेशन को माने सब किछि इनफॉरमेशन को एटलिस्ट 5 थर लिखाए लेख तुमर नोटबुक रे। तो ए टेक्निकटा साधारणतः कौन हे थाए यार करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन सी इनएफेक्टिव सिंस मोर रिहर्सल इज नॉट ए सुइटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एल्गोरिथम्स हेउरिस्टिक्स ट्रायल एंड एरर विदाउट कंप्रिहेंशन फंक्शनल फिक्सडनेस। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो एल्गोरिथम हेउरिस्टिक्स। ठीक अछि। तेबे ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर आई और डबल आई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रही देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच वन ऑफ दिस एक्टिविटीज इज नॉट इफेक्टिव फॉर मेकिंग यूज ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग रोट मेमोराइजेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग स्कीमा एक्टिवेशन कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो कोन ना रोट मेमोराइजेशन ना गोटे शिशु जहाँ प्रीवियसली पढ़ी के मन रखी ताको फ्यूचर पाई कि मन रखिबो तथा फ्यूचर लर्निंग पाई कि ताको सहाय्य करिबो एमान को मध्य रोट मेमोराइजेशन बा जो घोषा बलद भली घोषिकी रखिले से ता भविष्यत रे ताको करना यूज करि परिबो नाही। कारण जेतेबेले गोटे शिशु गोटे सब्जेक्ट को भलसे बुझी थाए ता मुंडर रे रखी थाए सेतेबेले जे कि से फ्यूचर रे ताको यूज करि परिबो किंतु घोषा बलद भली घोषिकी मन रखिले किछि लाभ हबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट उपरे मन को मध्यरु को स्टेटमेंटा करेक्ट देखिबा डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। ओके डेवलपमेंट को मॉडिफाई करि हबो। देन क्वेश्चन टी रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट proposes that children gain muscular control of arms relatively earlier than that of fingers. Proximodistal principle, cephalocaudal principle, independence of systems principle, hierarchical integration principle। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो proximodistal principle। देन क्वेश्चन टी रही डैश इज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन स्कूल मास मीडिया रिलीजियन की फैमिली। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो ऑप्शन डी फैमिली प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हेन ए चाइल्ड कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम विथ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली his problem solving characteristics comes under the stage of sensory motor age pre operational stage कि concrete operational stage कि formal operational stage। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो कोन ऑप्शन सी concrete operational stage। जेते बेले गोटे शिशु गोटे प्रॉब्लम को कंक्रीट ऑब्जेक्ट द्वारा सॉल्व करि पारि थाए तेबे तारो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक ता कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अंडर रे आसीबो। देन क्वेश्चन टी रही A child made a mental note that all creatures that have wings and can fly are called birds. Later she saw a bat in a picture book and identifies it as a bird instead of mammal. The process of knowledge construction described here as assimilation, accommodation, seriation, conservation. तो एठी हमको क्वेश्चन रे पचरा गला तो गोटे शिशु ऑलरेडी जानी थिला जेते सबु पक्षी रही जीव समस्ते उड़ी पारती से माने हेले बार्ड किंतु जेते बेले से बैट बा जो बादुड़ी को देखिला पिक्चर बुक रे से आइडेंटिफाई कला ताको एज ए बार्ड हिसाब रे इंस्टेड ऑफ मैमल। ठीक अछि। तो ये जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन टा एटा को कौन कहा जिवो एसिमिलेशन कहा जिवो। ओके तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए एसिमिलेशन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि देखिबा Who proposed that term zonoproximal development? Zonoproximal development होची काहंकर लेव वाइगोट्स्कींकर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही which of the following correctly specifies the major difference between Jean Piaget and Lev Vygotsky's view on cognitive development of children? ऑप्शन ए रही While Piaget emphasized child's independent efforts to make sense of their world, Vygotsky's views cognitive development as a socially mediated process. Obviously a option A हैला यार करेक्ट आंसर। आउ नेक्स्ट ऑप्शन को जिबा ही दरकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही फातिमा reasons you should be honest because then your parents would be proud of you. In which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral reasoning does Fatima come under? धरिनियो फातिमा कहिला
तुम्हें निहाती भाव में ऑनेस्ट रहिबा दरकार कारण तुमर पितामाता तथा पेरेंट मध्य तुमको नेकी एथिलागी प्राउड करिवे। तो कोहलबर्गर थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग रो को स्टेज बा को ओरिएंटेशन रे किना फातिमा आसुची सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कि पनिशमेंट ओबेडियंस ओरिएंटेशन। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन क्लास। ऑप्शन ए रही प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी रही मेकिंग एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुप्स इन क्लास। ऑप्शन सी रही फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स इन क्लास। ऑप्शन डी रही एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू गेट हाई मार्क्स बाय एनी मीन्स। एमान को मध्यरु कोटा हेल्प करी थाए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करबा लागि गोटे क्लासरूम रे। तो यार करेक्ट आंसर टी होची प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स। सब स्टूडेंट माननको इक्वल अपॉर्चुनिटी देकी से माननको सबुथरे पार्टिसिपेट जते बेले आमे माने करिपाकू दबा सेते बेले जायकी करना कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट गोटे क्लासरूम रे क्रिएट हे परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन रो एमान को मध्यरु कोटा होची गोटे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन ए रही फ्रिक्वेंट पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट टू असेस लर्निंग। ऑप्शन बी रही एम्फासिस ऑन स्कोरिंग हाईएस्ट इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी रही फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट इन द क्लासरूम। ऑप्शन डी रही फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर। तो यार करेक्ट आंसर टी हबो ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इफ ए चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड appropriately to the temperaments, intentions and modes of peer group, she has bodily kinetic intelligence, intrapersonal intelligence, interpersonal intelligence, musical intelligence। तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो सांग माने आजिर जेतिकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थिला आमे माने वर्तमान डिस्कशन करि सारिछे। आई होप कि आजिर क्लास तुम मानक लागि निहाती बहुत बढ़िया रहिथिबो कारण ए क्वेश्चन गुडाक ऑलरेडी तुमरो एग्जाम रे आसे सारिछि। जे कोनोसी एग्जाम रे सीडीपी रु ए क्वेश्चन गुडाक आसीछि प्रीवियस ईयर रे। तो निहाती तुमे माने ए सब को ध्यान दबो। तो वर्तमान क्लास टी को इठी रखुछि। थैंक यू।